Sub-involution. So what do we understand by sub-involution? When the involution is impaired or retarded, it is called sub-involution. The uterus is the most common organ affected in sub-involution as it is the most accessible organ to be measured per abdomen. The uterine involution is considered clinically as an index to assess sub-involution. After the pregnancy, the uterus will move back to its original size, position, right? तो अगर वो नहीं हो पा रहा है उसे हम कहेंगे sub-involution, right? तो predisposing factors क्या रहते हैं? कोई अगर ग्रैंड मल्टीपैरिटी है, ओवर डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस, ओवर डिस्टेंशन कब हो सकती है? ट्विंस में एंड हेड्रोमियोस, दैट इज योर पॉलीहेड्रोमियोस, ठीक है, या मेटर्नल इलनेस भी हो सकता है, सिजेरियन सेक्शन, प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, रेट्रोवर्जन आफ्टर द यूट्रस बिकम्स पेल्विक ऑर्गन एंड यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से. एंड व्हाट कैन बी द एग्रीवेटिंग फैक्टर्स? रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, ठीक है, अभी सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाहर रिमूव नहीं किए गए हैं, एंड यूट्राइन सेप्सिस, दैट इज योर एंडोमेट्राइटिस, राइट. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंडोमेट्राइटिस एंड एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है, अभी हम एंडोमेट्राइटिस बोल रहे हैं. सिम्टम्स क्या होंगे? द कंडीशन में बी एसिम्प्टोमेटिक. द प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स वुड बी एबनॉर्मल लोकिया डिस्चार्ज. इट कैन बी आइदर एक्सेसिव और प्रोलॉन्ग्ड. Irregular or at times excessive uterine bleeding is going to be there. Irregular cramp-like pain in cases of retained products or rise of temperature in sepsis. Signs: the uterine height is greater than the normal for the particular day of purpurium. Normal purpural uterus may be displaced by a full bladder or a loaded rectum. It feels boggy and softer. Presence of features responsible for sub-involution may be evident. How do we manage this? Mere size of the uterus is not important, and provided there is absence of features such as excessive lochia or irregular bleeding or sepsis, the size of the uterus can be safely ignored. But appropriate therapy is to be instituted only when sub-involution is found to be mere sign of some local pathology. So antibiotics in endometritis, exploration of the uterus in retained products, pessary in prolapse or retroversion, methergine, so often prescribed to enhance the involution process, is of little value in prophylaxis.